chanting and hearing. प्रभुपाद कहते हैं कि वृंदावन में हमारा सिर्फ श्रवण एवं जप करना, हरिनाम जप करना ही हमारा कार्य होना चाहिए. Because Vrindavan means always glorifying Krishna. वृंदावन का अर्थ है कृष्ण का गुणगान करना. So I was thinking what to speak today. सोच रहा था आज की बात में प्रवचन करूं. Because Krishna is unlimited. कृष्ण तो असीमित है. In the same way, his Dham Vrindavan is also unlimited. और उनके धाम वृंदावन भी असीमित है. And his pastimes in Vrindavan are also unlimited. और उनके जो लीला है उसकी भी कोई सीमा नहीं है. Ananta Shesh has been trying to glorify since time immemorial. अनंत शेष भगवान की गुणगान बहुत समय से करने की कोशिश कर रहे हैं. Anadikal se. अनादिकाल से करने की कोशिश कर रहे हैं. Even after that, he is not successful. उसके उपरांत भी उनको सफलता नहीं मिली. To get success in our spiritual journey, it is explained that we can get spiritual perfection in different ways in different dhams. हमारे आध्यात्मिक जीवन में सफलता पाना ये कहा गया है कि विभिन्न धाम में विभिन्न प्रकार से सफलता मिल सकती है. In Navadip Mayapur Dham, in order to get spiritual perfection, we have to chant the holy name of the Lord. नवदीप धाम में आध्यात्मिक सफलता परिपूर्णता के लिए हरि नाम की जप करनी चाहिए. जप और कीर्तन दोनों. In Jagannath Puri, process is more easier. जगन्नाथपुरी में ये थोड़ा और भी आसान है. In Jagannath Puri, you just have to honor prasadam. जगन्नाथपुरी में केवल महाप्रसाद का सेवन करना चाहिए. So Srila Prabhupada has given us two gods. One God is Chaitanya Mahaprabhu, one God is Lord Jagannath. प्रभुपाद ने हमें दो भगवान दिए हैं. एक है चैतन्य महाप्रभु और एक है भगवान जगन्नाथ. So Lord Jagannath is eating God and Lord Gauranga is dancing God. जगन्नाथ जी खाने वाले भगवान हैं और चैतन्य महाप्रभु नृत्य करने वाले भगवान हैं. So in order to get perfection in Mayapur, you just have to dance in Kirtan. मायापुर में सफलता के लिए आपको कीर्तन में नृत्य करना पड़ेगा केवल. And in Jagannath Puri, you just have to eat prasadam. जगन्नाथपुरी में केवल प्रसाद का सेवन करना पड़ेगा. And in order to get perfection in Vrindavan, और वृंदावन में सफलता पाने के लिए the process is rolling on the dust of Vrindavan. इसका जो माध्यम है वो वृंदावन की जो डस्ट है उसमें हमें रोल करना पड़ेगा. लोटपोत करना. The process is very simple. प्रोसेस ये जो विधि है ये बहुत ही सरल है. Rolling on the dust is very simple process. डस्ट में लोग को होना उनकी सरल उपाय है. That's why today we'll talk about dust of Vrindavan. तो आज हम वृंदावन का जो डस्ट है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे. So you are happy to hear that? आप ये सुनने के लिए उत्सुक हैं, खुश हैं? So let's try to prepare the mood how to roll on the dust. तो हमें अभी कोशिश करेंगे कि हम अपनी मानसिकता को तैयार करेंगे किस तरह से हम डस्ट में लोटपोट हो सकें. Unless we are properly situated in our mood and consciousness, we cannot get the desired result. जब तक हमें हमारी मानसिकता और भावना में हम ठीक तरह से अवस्थित नहीं होंगे तो हमें वो परिपूर्ण सफलता नहीं मिलेगी. Just like it is said, if you dip in the water of Radha Kund, जैसे कहा जाता है कि राधा कुंड के पानी में आप डुबकी लगाएंगे तो after you come out, you should have Gopi Bhav. उससे जब बाहर निकले राधा कुंड के पानी से तो आपको गोपी भाव आपको दिखना चाहिए, होना चाहिए. So how many of you took dip in Radha Kund this time? किन्होंने राधा कुंड में डुबकी लगाई? Only few. Okay. बस कुछ लोग. Many devotees said that we have done this service dipping in the water of Radha Kund many times, but no Gopi Bhav.
बहुत भक्त कहते हैं हमें कई बार हम राधापुर में जाके राधापुर के पानी में डुबकी लगाए हैं, परंतु वो भी बार हमें आया नहीं है। So Narad Muni wanted to enter into Ras Leela. नारद मुनि रासलीला में प्रवेश करना चाहे। So Lord Shiva discouraged him. लॉर्ड भगवान शिव ने उन्हें उसके लिए उन्हें उत्सुकता नहीं दिया उसने। But Narad Muni said, I'll try. नारद मुनि कहे कि मैं कोशिश करूंगा। So Lord Shiva said, how you can enter into Ras Leela? Because in order to enter into Ras Leela, you have to have Gopi Deha, the body of Gopi. You are a brahmachari. शिव भगवान ने कहे आप कैसे रासलीला में प्रवेश कर सकते हैं? रासलीला में प्रवेश करने के लिए आपको एक गोपी का देह की आवश्यकता है। आप तो ब्रह्मचारी हैं। Said, I'll do the austerity. तो मैं नारद मुनि कहते हैं मैं तपस्या करने वाला हूँ। So he was there at Narad Kund near Kusum Sarovar, started doing the austerity. तो नारद मुनि कुसुम सरोवर के निकट नारद कुंड में अवस्थित हुए तपस्या करने हेतु। And by seeing his austerity, that the manager of Vrindavan, who is the manager of Vrindavan? No. Vrinda Devi. He is the temple president of Vrindavan. और उनकी तपस्या देख के जो वृंदावन के जो सहयोगी थे, जो मैनेजर थे, वो कौन है? वो है वृंदावन, वो वृंदा देवी, वो वृंदावन के टेम्पल प्रेसिडेंट है। But Radharani is not the temple president. Radharani is the owner of Vrindavan. परंतु राधारानी अध्यक्ष नहीं है, राधारानी स्वयं वृंदावन की जो मालकिन है। So Narad Muni was advised by Vrinda Devi that you are doing so much austerity, but I have some simple process for you. तो वृंदा देवी ने नारद मुनि को यह सलाह दी कि आप अगर तपस्या करना चाहते हैं, मेरे पास एक सरल उपाय है। You just come with me. आप सिर्फ मेरे साथ रहिए। And she brought him to Kusum Sarovar और वो नारद मुनि को कुसुम सरोवर में लेकर गए and told him, please dip into the water of Kusum Sarovar. और उन्होंने नारद मुनि को सलाह दी कि कुसुम सरोवर के पानी में आप जरा स्नान कीजिए, डुबकी लगाइए. So he dipped into the water, came out. No more Narad Muni. He became Naradi Gopi. तो नारद मुनि कुसुम सरोवर के पानी में डुबकी लगाने से बाहर आए, तो वो नारद मुनि प्रतीत नहीं हुए, वो नारद मुनि को भी बन के प्रतीत हुए। So many devotees with that desire, still today they dip into that water, but comes out with the same body. बहुत उसी आशा से उस पानी में जाके कुसुम सरोवर में डुबकी लगाते हैं, परंतु वो जब वापस आते तो उनका वही देह रह जाता है। Narad Muni could get the body of Gopi, but we are not getting. Why? नारद मुनि को गोपी देह प्राप्त हुआ, परंतु हमें वो प्राप्त नहीं होता। क्यों? That's why we are discussing the mood and consciousness. इसीलिए हम उस भावना एवं उस मानसिकता के बारे में आज चर्चा कर रहे हैं। So coming back to the dust of Vrindavan. हम वापस चलते हैं वृंदावन की रस की आलोचना की ओर। So we will hear from the journey of Akrura, तो हम जो अक्रूरा की यात्रा है उनके बारे में हम सुनेंगे, and also we'll discuss about Uddhava. और आज हम उद्धव के बारे में चर्चा करेंगे। So Akrura was instructed by Kamsa to bring Krishna Balaram from Vrindavan to Mathura. तो अक्रूरा को कंस ने उनको सलाह दी कि कृष्ण बलराम को मथुरा में लेके आइए। So Akrura started in the morning अक्रूरा ने सुबह उनकी यात्रा शुरू की and he reached Nandagaon at the evening time. और वो नंदगांव सायंकाल में पहुंचे। And I was explaining other day why it took so long for Akrura to reach Vrindavan. और मैं उस दिन आप सबको बता रहा था कि वृंदावन पहुंचने में अक्रूर को उतना समय क्यों लगेगा? Because Akrura was completely absorbed in the thoughts of Krishna Balaram and Vrindavan Dham. क्योंकि अक्रूर जो है
पूरी तरह से वृंदावन धाम और कृष्ण के भावना में एवं चिंतन में मग्न थे। So when he reached the border of Vrindavan Dham, और जब वो वृंदावन धाम की सीमा में वो पहुंचे, so Akrura jumped out of his chariot and started rolling on the dust of Vrindavan. अक्रूर अपने रथ से तुरंत कूद के, रथ से निकल के वृंदावन के जो रथ है उसमें लोट-पोट खाने लगे। Sukadev Goswami explains, by doing that, Akrura gave up 3 bad qualities. सुखदेव गोस्वामी ये बताते हैं कि वो आचरण करके अक्रूर अपने 3 जो बुरे आदतें हैं उनको त्यागा। He gave up pride, उन्होंने अपना जो ahankar. अहंकार है उसको त्यागा। He gave up fear, उन्होंने अपने डर को त्यागा। and he gave up lamentation. और उन्होंने जो अपना जो शोक उठाया। So these are 3 things Akrura gave up while rolling on the dust of Vrindavan. ये 3 चीजें जो है अक्रूर त्याग किए कब, जब वो वृंदावन के रस में लोट-पोट खा रहे थे। And these are the 3 main qualifications to roll on the dust of Vrindavan. और यही भी योग्यताएं हैं वृंदावन के रस में रोल करने के लिए, लोट-पोट खाने के लिए। First is giving up pride, अहंकार त्यागना सबसे पहली योग्यता है and that is most difficult part of our spiritual journey. और ये सबसे कठिन त्याग है हमारे आध्यात्मिक जीवन में। Akrura never thought, oh, I am from a royal family, I am on the chariot, I have a royal dress, why to roll on the dust? अक्रूर ने कभी ये नहीं सोचा कि मैं एक राजा के परिवार से हूँ, मैं एक राजा के पोशाक में हूँ, क्यों मैं रथ में लोट-पोट खाने चली हूँ। If we have that kind of material pride, then we cannot take the advantage of the mercy of the dust of Vrindavan. अगर हमारे पास ऐसी भौतिक अहंकार है तो हम जो रस की जो कृपा है वो हमें कभी प्राप्त नहीं होगी। In order to get the mercy of the dust of Vrindavan, we have to give up our pride. वृंदावन की जो रस है उनकी जो कृपा अगर हमें चाहिए तो हमें अपना अहंकार त्यागना होगा। Second is giving up fear. दूसरा है हमें जो अपने भय है उस भय को त्यागना होगा। Prabhupada says, Shastra says, this world is the world of fear. शास्त्र इस वर्णन करते हैं कि ये जो जगत है ये भयपूर्ण जगत है। As long as we have bodily concept of life, we will have fear. जब तक हमें इस भौतिक शरीर की जो भावना की जो जीवन रहेगी तब तक हमें ये भय हमें रहेगा। Parikshit Maharaj was cursed to die in 7 days. परीक्षित महाराज को 7 दिन में मृत्यु की शाप मिला। But he did not become fearful. वो भयभीत नहीं हुए Oh, I have to die, I have to die. कि हमें अभी मृत्यु आने वाली है। He didn't try to extend that 7 days to 7 months, something like that. और उन्होंने ये प्रयास किया कि 7 दिन को विस्तार करके इस तरह से 7 महीने किया जाए। He thought that anyway I have to die. वो सोचे वैसे तो मृत्यु आने ही वाली है। This world is the world of death. ये जो जगत है ये तो मृत्यु का जगत है। And we don't know when we are going to die. हमें पता नहीं कब हमारी मृत्यु कब आने वाली है। Parikshit Maharaj thought that I at least got 7 days notice. परीक्षित महाराज सोचे मुझे कम से कम 7 दिन की जो सूचना तो मिली है। And he thought that 7 days is too small. और वो सोचे 7 दिन तो बहुत ही छोटा समय है। But when he met Sukadev Goswami, और जब उनके जो सुखदेव गोस्वामी के साथ जब संग मिला, Sukadev Goswami said 7 days is too long time. सुखदेव गोस्वामी ने उन्हें बताया कि जो 7 दिन है वो बहुत लंबा समय है। Khattanga Maharaj achieved perfection in one moment. खट्टंग महाराज एक मुहूर्त में उन्हें परिपूर्णता सफलता मिली। It's not a matter of days or weeks or months or years. ये दिन
या सप्ताह या महीने या वर्ष की बात नहीं है। It is the matter of our consciousness to completely surrender. ये हमारी भावना की बात है, कैसे हम भावना को पूर्ण रूप से शरण कर सकते हैं। The moment we take shelter of the lotus feet of Krishna completely, then we become fearless. जैसे ही हम भगवान कृष्ण के शरण हो जाते हैं, उनका आश्रय लेते हैं, उसी समय हम भय को त्याग करते हैं, हम भय से दूर हो जाते हैं। Because Krishna has declared, Name Bhakta Pranashati, कृष्ण कहते हैं that my devotees never perish. मेरा भक्त वो कभी भी नष्ट नहीं होता। Then you ask, devotees also die? आप पूछ सकते हैं, आप भी मृत्यु को प्राप्त करते हैं। So Parikshit Maharaj also died. ऋषि महाराज भी मृत्यु को प्राप्त हुए। So what's the big deal? इससे कौन सी बड़ी बात है? It's a very, very big deal. ये बहुत ही बड़ी बात है। It's not that death. The main criteria is that how someone is dying. ये मृत्यु की बात नहीं है। ये बात है किस तरह से हमने मृत्यु का सामना किया। A cat will die, a dog will die, everyone will die, but one who dies knowing Krishna is a successful death. कुत्ते बिल्ली सब मृत्यु को प्राप्त होंगे, परंतु जो कृष्ण की तत्व को जानकर मृत्यु को प्राप्त होगा, वो एक सफल मृत्यु। Parikshit Maharaj became fearless. परीक्षित महाराज भयभीत नहीं थे। Why? Because Sukdev Goswami told him, just hear Srimad Bhagavatam. क्यों? क्योंकि सुखदेव गोस्वामी ने उन्हें ये सलाह दिया कि केवल श्रीमद् भागवत का श्रवण कीजिए। Just immerse in the nectar of Krishna Katha. और केवल मात्र कृष्ण कथा की जो अमृत है, उसमें आप पूरी तरह से डूब जाइए। And because of that, Parikshit Maharaj was completely absorbed and became fearless. और उसके वजह से परीक्षित महाराज पूर्ण रूप से कृष्ण भावना में थे और पूरी रूप से भय को त्याग सके। In the same way, Akrura was also fearless. उसी तरह से अक्रूर भी अभय थे। He never thought, oh, if Kamsa comes to know that I love Krishna, I am Krishna's man, then my family will be tortured, I may be killed. हरे कृष्णा। Connection आएगा? There is generator facility here. हरे कृष्णा। Hare Krishna. हरे कृष्णा। तो अक्रूर ऐसा नहीं सोचा कि कंस क्या करने वाले हैं जब उन्हें पता चलेगा कि मैं कृष्ण के बारे में सोच रहा हूँ, मैं उनके परिवार से हूँ। Then my family may be tortured, I may be killed. मेरे परिवार को नुकसान हो सकता है, उनको हानि पहुंचा सकते हैं, मुझे वो मृत्यु दंड दे सकते हैं। ऐसा नहीं सोचा अक्रूर ने। He never thought like that. अक्रूर ने ऐसा नहीं सोचा। He was completely free from all this fear. ऐसा भय से वो पूर्ण रूप से मुक्त थे। And third was, he was free from lamentation. और तीसरा जो पॉइंट है, वो ये जो शोक है, शोक से भी मुक्त थे। This world is the world of hankering and lamentation. ये जो जगत है, ये जगत आसक्ति एवं शोक में भरा हुआ जगत है। हैंकरिंग आसक्ति नहीं होगा। हैंकरिंग का क्या होगा हिंदी? आशा से आशा अलग है। तृष्णा, लालसा, तृष्णा, लोभ तो अलग है, ग्रीड है। ठीक है, हैंकरिंग अच्छा है। तो लैमेंटेशन और हैंकरिंग, these are the two cause of bondage in this material world. So शोक एवं जो लालसा है, ये दो प्रमुख कारण है इस जीवन में बंध रहने का। Akrura was not lamenting, oh, who will take care of my family? I am in Vrindavan now. Then who will take care of my son? Who will take care of my wife? He was not thinking like that.
अक्रूर ये सोच के नित्य रूप से शोक नहीं कर रहे थे कि मैं वृंदावन धाम में हूँ, कौन मेरे परिवार का ख्याल रखने वाला है, उनका भरण पोषण कौन रखने वाला है, ऐसा भावना अक्रूर के पास नहीं था। So in order to get the mercy of the dust of Vrindavan, we have to be free from lamentation. इसलिए अगर वृंदावन की जो रस की अगर हमें कृपा चाहिए तो हमें शोक मुक्त रहना है। And that's why Akrura immediately got the mercy of the dust of Vrindavan, and he could see Krishna Balaram was returning back from grazing the cows in the forest. So अब इसलिए अक्रूर को तुरंत ही वृंदावन का कृपा को मिल गया और उन्हें कृष्ण बलराम का दर्शन मिला जब वो गोचरण करके वापस आ रहे थे। In the same way, if we want to get the mercy of the dust of the Vrindavan Dham, then we have to have these three qualities: freedom from pride, also fear and lamentation. तो हमें भी इसी तरह से हमें भी ये अगर वृंदावन के रस की कृपा चाहिए तो हमें इन तीन चीजों से मुक्त रहना पड़ेगा: अहंकार, भय एवं शोक। Then come back to Uddhava. अभी हम उद्धव की तरफ चलते हैं। Everybody wants the dust of the lotus feet of Srimati Radharani and Gopis. And all the demigods also came like that. Brahma, Shiva, Vishnu, all they came in the form of hills. चरण धूल राधा रानी एवं गोपियों के चरण धूल के लिए सभी उत्सुक थे। ब्रह्मा, अन्य देव देवता ये सब भी प्रकट हुए ये चरण धूल के लिए एक पहाड़ के रूप में। So Brahma appeared as a hill in Barsana. तो ब्रह्मा बरसाने के जो पर्वत है उस रूप में प्रकट हुए। Lord Shiva appeared in Nandagaon. भगवान शिव नंदगांव में प्रकट हुए। And Vishnu appeared as Giriraj Govardhan. और विष्णु गिरिराज गोवर्धन के रूप में प्रकट हुए। And all these three personalities, they want the dust from the lotus feet of the gopis and Srimati Radharani. और ये तीन गौरवशील जो देवता है इन लोगों को क्या चाहिए था? श्रीमती राधा रानी के चरण। Uddhava is a great devotee. उद्धव एक बहुत बड़े भक्त थे। I think out of Vrindavan, he is the best devotee. वृंदावन में वो सबसे अच्छे भक्त थे। नहीं, वृंदावन से बाहर. अच्छा, या वृंदावन के बाहर, वो वृंदावन मंडल के बाहर सबसे बड़े भक्त थे। So Krishna wanted to show to Uddhava the greatness of Brajavasis. और कृष्णा उद्धव को दिखाना चाहते थे कि ब्रजवासी की जो गौरव है उसको दिखाना चाहते थे। Because Uddhava was thinking that he is a very good devotee. उद्धव को ऐसा लगता था कि वो बहुत अच्छे हैं। So Krishna wanted to clear that. और कृष्णा उनकी जो मानसिकता है उसको सुधारना चाहते थे। That's why he thought better to send Uddhava to Vrindavan. ऐसे इसलिए सोचा कि उद्धव को वृंदावन भेज देता हूँ। In order to experience humility, we have to come to Vrindavan. अगर हमें नम्रता की अनुभूति होनी है तो हमें वृंदावन आना चाहिए। So Uddhava came. उद्धव आए। He is highly knowledgeable person. उद्धव बहुत ही ज्ञानी थे। He knows all the Shastra. शास्त्र का पूर्ण ज्ञान था। And he saw that Brajavasis are crying. और वो देखे ब्रजवासी विलाप कर रहे थे। So in this world also people cry. In this world everybody is crying. इस जगत में भी सब लोग विलाप करते हैं, रोते हैं। Material world is the world of crying. ये जो भौतिक जगत है ये तो एक विलाप करने वाली जगत है। When we take birth, जब हम जन्म लेते हैं, who gives birth and who takes birth, both of them cry. जो जन्म प्रदान करते हैं जन्म लेते हैं दोनों रोते हैं। And if they don't cry, people think there is some problem. और अगर रोते नहीं है सब लोग सोचते हैं कि हाँ कुछ गड़बड़ है। If both of them cry, oh, normal birth. अगर दोनों रोते हैं इसका मतलब जो जन्म है वो एक साधारण सफल जन्म है। We come into this world crying. हम इस जगत में रो के प्रवेश करते हैं। And when we leave this world also, we cry.
और हम जगत को जब त्यागते हैं तब भी रोते हैं। And you have the experience during, in between, we are all crying. और इसके दौरान भी कई बार हम रोते हैं। So there is nothing unusual. तो ये कोई असाधारण ये कोई बात नहीं है। This is the world of crying. ये जगत क्रंदन का जगत है, रोने का जगत है। Arjuna was crying. अर्जुन रो रहे थे। Then Krishna spoke Bhagavad Gita. कृष्ण ने भगवत गीता का ज्ञान दिया। But when Uddhava came, Brajavasis were crying. जब उद्धव आए तो ब्रजवासी लाभ कर रहे हैं। But Brajavasis were crying for Krishna. परंतु ब्रजवासी कृष्ण के लिए क्रंदन कर रहे थे। Crying for Krishna is the perfection of our life. कृष्ण के लिए क्रंदन करना हमारे जीवन की परिपूर्णता है। Uddhava knew that. उद्धव ये जानते थे. वो ये जानते थे Because he is knowledgeable. क्योंकि उनको ज्ञान था। But he did not know what does that mean. परंतु उन्हें पता नहीं था कि उसका जो परिभाषा जो अर्थ क्या है। When he saw Brajavasis crying like that, 24 hours crying. जब उन्होंने देखा कि ब्रजवासी 24 घंटा क्रंदन कर रहे हैं। Because Brajavasis were thinking to leave their body. क्योंकि ब्रजवासी अपने शरीर को त्याग करने की मानसिकता में थे। They thought, what is the use of this body if we are not with Krishna? वो सोच रहे थे कि इस जो देह है इसका क्या प्रयोग है अगर कृष्ण के ही साथ में नहीं है। But they are thinking, if we give up our bodies, then Krishna comes to know, then he will be very unhappy. और वो ये भी सोच रहे थे कि अगर हम देह त्याग दिए और कृष्ण को अगर ये पता चल गया तो कृष्ण को ये सुन के खुशी नहीं होगी। So they are thinking, then we should not die. फिर वो सोचे हम कृष्ण भी जाएंगे। So what is their situation? तो ये कैसा एक स्थिति है? They cannot live, वो जी नहीं सकते, they cannot die. वो मर नहीं सकते। What they can do? तो क्या कर सकते हैं? They can only cry. वो सिर्फ रो सकते हैं, क्रंदन कर सकते हैं। That is the situation of Brajavasis. वो ब्रजवासी की स्थिति है। Prabhupada said, I established ISKCON to teach my devotees how to cry for Krishna. प्रभुपाद कह रहे हैं कि मैं इस्कॉन की स्थापना इसलिए किया कि मैं अपने भक्तों को, अपने शिष्यों को सिखाना चाहता हूँ किस तरह कृष्ण के लिए रोते हैं। So Uddhava, what he can do? उद्धव क्या कर सकते हैं? If you cry for material things, then you can say, oh, you are not this body, you are the spirit soul, he has died, don't cry for him. But they are crying for Krishna. उद्धव क्या कर सकते हैं? अगर भौतिक विषय के लिए, भौतिक वस्तु के लिए रोते हैं तो आप कर सकते हैं कि हम ये देह नहीं है, हम आत्मा है। परंतु वो तो कृष्ण के लिए विचार कर रहे थे। He started thinking, what knowledge I can give. वो सोच रहे थे मैं उनको क्या ज्ञान प्रदान करूं। After seeing they are crying, he encouraged them, keep on crying, crying, crying for Krishna. तो उनको देख के वो सोचे कि मैं उनको और भी प्रोत्साहन दूं कि आप कृष्ण के लिए और भी रोते रहे। That is Uddhava's position. वो उद्धव का जो स्थिति है। And then he started thinking, what is the use of my life? और वो सोचने लगे ये मेरा जो जीवन है उसका क्या प्रयोग है। So better I give up my this body and take birth as grass of Vrindavan. वो सोचने लगे मैं अपना शरीर त्याग दूं और वृंदावन के तृण के रूप में, घास के रूप में जन्म ग्रहण करूं। So that the gopis, Radharani, they can trample on me and I can get the dust of their lotus feet. ताकि जो गोपियां हैं, राधा रानी हैं, वो अपने चरणों से मुझे कुचल सके और मैं उनके चरण धूलि प्राप्त करूं। Uddhava is still there in that form. उद्धव उस रूप में अभी भी है। So Uddhava out of Vrindavan is the greatest personality, but in Vrindavan he is a grass. उद्धव वृंदावन के बाहर उद्धव एक बहुत ही गौरवशील व्यक्तित्व है, एक बहुत ही बड़े भक्त व्यक्तित्व है, परंतु वृंदावन में वो केवल एक तृण है। So Krishna wants to declare that devotees of Vrindavan are the topmost devotees. तो कृष्ण ये सबको ये बात कहना चाहते हैं कि जो वृंदावन है, वृंदावन वासी है, वो सबसे बड़े भक्त हैं। But in Vrindavan also there are many devotees, but gopis are the topmost devotees.
वृंदावन में बहुत प्रकार के भक्त थे, और भक्तों में गोपियां सबसे ऊंचे भक्त थे। And out of all the gopis, Srimati Radharani is the topmost devotee. और गोपियों में श्रीमती राधा रानी सर्वश्रेष्ठ गोपी है। Do you accept this? आप ये मानते हैं? You have doubt? आपको कोई संशय है? Even if you have doubt or don't have doubt, I'll tell a story to clear the doubt. अगर आपको कोई संशय है या नहीं है, मैं एक कहानी आपको बताऊंगा, आपको ये संशय दूर हो जाएगी। So how many gopis are there? कितने गोपियां थी? You have any idea? Not 3 million, 3 billion. So when Krishna was performing Maharas Leela, 3 billion devotees or gopis were dancing with Krishna. जब कृष्णा महारास लीला कर रहे थे, तो 3 करोड़ गोपियां, 300 crore. 300 करोड़ गोपियां उसमें उसमें थे, नृत्य कर रही थी. नृत्य कर रहे थे। Then people ask that Rasasthali is too small. How 300 crores or 3 billion people are accommodated? साधारण व्यक्ति प्रश्न पूछते हैं कि रासस्थली में एक छोटा सा जगह है, उस जगह में कैसे 300 करोड़ गोपियां उसमें नृत्य कर रहे हैं? Now population of India is 140 crores. अभी भारत की आबादी जो है 140 करोड़ है। So how so many people are fitting in? तो उस रासस्थली में कैसे इतने सारे गोपियां उसमें समा सके? So do you believe? आप विश्वास करते हैं? So many gopis are there. आप विश्वास करते हैं उतने गोपियां हैं? Can you understand? आप समझ सकते हैं? Very difficult to understand. ये मानना बहुत ही कठिन है, Because this is the Achinta Shakti of Krishna. क्योंकि ये कृष्ण का असीमित शक्ति है। In order to understand Krishna's Leela in Vrindavan, we have to have complete faith in the Achinta Shakti of the Supreme Personality of God. वृंदावन में भगवान की जो लीला है, उसको समझने के लिए हमें भगवान की जो अचिंत्य शक्ति है, उस पर हमें पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। And each gopi was thinking, Krishna is with me. हर एक गोपी को ये विश्वास था कि कृष्ण मेरे ही साथ है। Very interesting situation. ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग स्थिति है। Same thing happened in Dwarka also. द्वारका में भी ऐसा घटना हुई। But in Dwarka number was 16,108. द्वारका में 16,108 लोग थे। So Narad Muni wanted to see how my Lord is managing because he's a brahmachari now. नारद मुनि को ये खुद दर्शन लेना था कि मेरे भगवान इसको कैसे मैनेज कर रहे हैं, कैसे इसको आयोजन कर रहे हैं। Those who are having family life, they know managing family life is not that easy. Any life is difficult in this world. जिस जो परिवार पालन करते हैं उनको पता है कि एक परिवार पालन करना उतना सरल नहीं है। Such a huge family. 16,108 queens. इतना विशाल परिवार, 16,108 रानियां, And each queen had 10 sons and 1 daughter. और हर एक रानी को 10 पुत्र एवं 1 पुत्री लाभ है। So small family or? छोटा परिवार था, लेकिन विशाल। So when Narad Muni came to check, he saw Krishna was there in every house, every palace. जब नारद मुनि ये सर्वेक्षण कर रहे हैं, तो उन्हें दिखा कि हर एक महल में कृष्ण थे। That is not the only thing. And every aspect or every phase of the day was simultaneously present in Dwarka. और केवल यही नहीं, हर एक पूरे दिन का जो हर एक पहलू है, वो एक साथ द्वारका में अवस्थित थे। In one palace he is performing morning duties, in other palace same time he is performing noon duties, other afternoon duties, evening duties. All the phases of the day were simultaneously present in Dwarka. एक ही साथ द्वारका में एक महल में कृष्ण अपने सुबह का जो पूजा पाठ कर रहे थे, एक जगह दोपहर का जो दायित्व थे वो कर रहे थे। एक ही साथ सभी महलों में भगवान कृष्ण अपने कार्यशील थे।
This is the inconceivable potency of the Supreme Personality of God. ये अचिंत्य शक्ति है भगवान की। So I'll tell the story because my time is ticking. तो मैं अभी काफी बताने वाला हूँ, समय पूर्ण हो रहा है। To clear the doubt whether Radharani is the topmost devotee or not. आपका ये संशय कि राधा सबसे श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ भक्त है कि नहीं? Very interesting pastime, very interesting. ये बहुत ही रोमांचकारी लीला है। Quickly I'll finish. So one day Krishna told Radharani that Radharani, you are the topmost devotee कृष्ण ने राधा को कहा कि आप सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं। and you are greater than Mother Jasoda. आप माँ यशोदा से भी श्रेष्ठ हैं। So Radharani said, oh, don't try to. ऐसा मत करो। So he said, oh, you don't believe in my words? I'll prove that you are superior to Mother Jasoda. आपको मेरे मेरे बातों पे विश्वास नहीं है, मैं आपको अभी ये स्थापना करूंगा कि माँ यशोदा से भी सर्वश्रेष्ठ भक्त है। So I want to give a caution that we should not compare between Radharani and Mother Jasoda. मैं चेतावनी देना चाहता हूँ, हमें माँ यशोदा एवं राधा रानी की तुलना नहीं करनी चाहिए। Their position we cannot understand. They are supermost, they are topmost devotees of the Supreme Personality of God. उनका जो पोजीशन है वो हमें समझ में नहीं आएगा, वो बहुत ही सर्वोच्च, बहुत ही श्रेष्ठ पोजीशन। But this story tries to make us understand the position of Srimati Radharani. परंतु ये जो कहानी है, ये हमें श्रीमती राधा रानी की जो पोजीशन है उसको समझने में हमें हेल्प करेगी, सहायता करेगी। सहायता करेगी। So one day, Mother Jasoda realized that Krishna is not coming, although it's evening. एक दिन माँ यशोदा को ऐसा लगा कि शाम के टाइम हो गया है, परंतु कृष्ण अभी तक वापस नहीं आए। He started thinking, where is Krishna? Where is Krishna? कृष्ण कहाँ है? कृष्ण कहाँ है? She was in anxiety. और वो एक दुविधा, मानसिक दुविधा में थी। Then she saw from a far distance that Krishna is with the gopis and Krishna is dancing there. और उन्हें दूर से ऐसा दिखाई दिया कि कृष्ण गोपियों के बीच वो नृत्य कर रहे थे। Then Mother Jasoda came to the gopis in an angry mood and she started scolding them. You don't have any feeling for Krishna. Whole day he was grazing the cows. Now you are making him dance instead of allowing him to take rest, take prasad. और वो गोपी का क्रोधपूर्ण थे और उनको तिरस्कार किए कि तुम्हें खराब नहीं लगता, सारा दिन कृष्ण वे गोचरण कर रहे थे, अभी वापस आने शाम को उनको नृत्य करवा रहे हो। Then Radharani said, Gopi said, wait. गोपियां कहे, रुकिए, This is not your Krishna. ये आपका कृष्ण नहीं है, This is our Krishna. ये हमारे कृष्ण। Your Krishna goes to the forest to graze the cows. आपके कृष्ण जंगल में गोचरण करने जाते हैं, But our Krishna always dances with us. हमारे कृष्ण हमारे बीच नृत्य करते हैं। Then Mother Jasoda started thinking, oh, I thought only one Krishna in Vrindavan. सोचने लगी, मैं सोचा एक कृष्ण है वृंदावन में, This is news to me. There are two Krishnas. दो कृष्ण हैं। So he said, I have a proposal. मेरे एक प्रपोजल है, Why not these two Krishna become friends? तो क्यों ना ये जो दो कृष्ण मित्र बन जाए। He said, okay. ठीक है, ये मंजूर है। So Krishna with the gopis came to the house of Nanda Maharaj. गोपी के साथ कृष्ण का दरबार महाराज भवन में पधारे And Krishna came out from his room. और कृष्ण अपने जो कक्ष है उससे बाहर आए, Exactly same. दोनों बिल्कुल सेम। So Mother Jasoda was wonderstruck by seeing two Krishnas. यशोदा को यह वो आश्चर्य हो गया ऐसे दो समान कृष्ण को देख के। Then Mother Jasoda said, why not both Krishna start dancing together? क्यों ना ये दोनों कृष्ण एक साथ नृत्य करने लगे। Krishna is an expert dancer. If two Krishna start dancing, it will be very wonderful to see, right? कृष्ण एक बहुत ही सुंदर नृत्यकारी है, अगर दोनों एक साथ नाचे तो बहुत ही सुंदर प्रतीत होगा। What do you think about this idea? Mother Jasoda started asking. मतलब जैसे बोले कि ये आइडिया के बारे में आपको कैसा लगता है? Said, good idea, ये अच्छा आइडिया है, but we have one condition. एक शर्त है, We will put mark on our Krishna so that we should not be bewildered who's Krishna. We should not mix up.
हम अपने कृष्ण में एक चिन्ह लगा देंगे ताकि दो कृष्ण में हम अंतर कर सकें। So gopis, they put white mark on the forehead of their Krishna. गोपियां अपने कृष्ण के माथे पे एक सफेद चिन्ह लगा दें। And so now dance can start. अभी नृत्य शुरू हो सकती है। So they are dancing together, both Krishna, wonderful dancing. बहुत ही सुंदर नृत्य चालू हो। So after some time, कुछ देर पूर्व they started seeing only one Krishna. बाद में से एक ही कृष्ण सबको दिखाई दिया। And Mother Yashoda took the hand of Krishna. He said, "Let Krishna come to our room." और माता यशोदा ने कृष्ण का जो हाथ है उसको पकड़ के बोले कृष्ण हमारे भवन में मेरे कक्ष में अंदर आए। Radharani said, "Let us check whose Krishna is this." राधारानी बोले अभी हमें चेक करने दीजिए कौन कौन सा कृष्ण है ये। And they recognized that white mark on the forehead. सफेद चिन्ह कृष्ण के माथे पर था। So Radharani said, "This is our Krishna." राधारानी ने बताया कि हमारा कृष्ण है। Then Mother said, "Where is my Krishna? Where is my Krishna?" और माँ यशोदा मेरा कृष्ण कहाँ है? Out of anxiety, she fainted on the ground, unconscious. और वो इसी चिंता से वो मूर्छित हो गई। Then Krishna told gopis, Radharani, just chant my name in the ear of Mother Yashoda, she will wake up. कृष्ण ने गोपियों को सलाह दी कि माता यशोदा के कान में मेरा नाम की कीर्तन करो। Before fainting, Mother Yashoda was begging Srimati Radharani, please give back my Krishna, please give back my Krishna. क्योंकि माँ यशोदा राधा रानी से भिक्षा मांग रही थी कि मेरे कृष्ण मुझे वापस लौटा दो। So by this pastime, then after some time, Mother Yashoda regained her consciousness and Krishna was also there. So everything was okay. बाद में माता यशोदा की जो चेतना है वो वापस आ गई और सब कुछ ठीक ठाक। By this pastime, Krishna established the position of Gopis Krishna is superior to Yashoda Krishna. इस लीला से भगवान कृष्ण घोषणा करते हैं और स्थापना करते हैं कि गोपियों की जो कृष्ण है वो राधा रानी सबसे श्रेष्ठ भक्त है। So it is said Krishna is complete. ऐसा कहा है कि कृष्ण परिपूर्ण है। In Dwarka he is complete, in Mathura more complete, in Vrindavan most complete. द्वारका में वो परिपूर्ण है, मथुरा में उससे ज्यादा परिपूर्ण है और वृंदावन में वो सबसे ज्यादा परिपूर्ण है। So Krishna is complete in Sakharas in Vrindavan. कृष्ण वृंदावन में साक्ष्य रस में परिपूर्ण है। More complete in Vatsalaras. वात्सल्य रस में उससे भी ज्यादा परिपूर्ण है। And most complete in Madhurya Ras. और सबसे श्रेष्ठ रूप से परिपूर्ण माधुर्य रस में। And that is the teaching of Chaitanya Mahaprabhu. And he came to give that love, Gopi's love for Krishna to anyone and everyone by congregational chanting of the holy name. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. ये शिक्षा है चैतन्य महाप्रभु सबको प्रदान करने वाले हैं कि ये जो भाव है ये सब एक साथ मिलकर अगर भगवान संकीर्तन करें कृष्ण के महामंत्र का संकीर्तन करें उन्हें ये भाव प्राप्त हो सकता है। We should not try to have artificial means to have Gopi Bhav. तो हमें गोपी भाव मिलने के लिए कोई एक आर्टिफिशियल कोई तरीका नहीं अपनाना चाहिए। In order to attain Gopi Bhav in Vrindavan, we have to develop Dasya Bhav in relationship with the Chaitanya Mahaprabhu. गोपी भाव हमें वृंदावन में वो मिलने के लिए हमें दास्य भाव को अपनाना पड़ेगा। When we become the servant of Chaitanya Mahaprabhu, जब हम चैतन्य महाप्रभु के दासत्व ग्रहण करेंगे and chant and dance in the Sankirtan movement, और हम महामंत्र का जप और संकीर्तन में हम कीर्तन एवं नृत्य करें, and that mood of the Brajavasi, especially the gopis, will manifest in our heart. तो वो ब्रजवासी स्पेशली जो गोपियां हैं उनकी जो भावना मानसिकता है वो हमारे लिए तब प्रतीत हो। That is the process. यही प्रयास है, यही जो तरीका है। Srila Prabhupada, Srila Bhaktivedanta Saraswati Thakur Prabhupada, Bhaktivinoda Thakur warned us not to have some other means artificially try to develop Gopi Bhav. तो इस तरह से प्रभुपाद बhaktivinoda ठाकुर ने चेतावनी दी है कि इस और कोई रास्ता ना अपने गोपी भाव में मिलने के लिए। Take shelter of Chaitanya Mahaprabhu, चैतन्य महाप्रभु के शरण में completely surrender
our life for the mission of Chaitanya Mahaprabhu. और अपना जीवन पूर्ण रूप से चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षा है उसकी शरण में हो, Everything will be given. और सब कुछ हमें प्राप्त हो। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय। बोल प्रेमानंद।